Jai Hind everyone. My name is Vaishnavi Singh Sengar and I have been recently recommended for Navy Tech for the branch of NAIC, that is Naval Armament Inspection Cadre. मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी की एक छात्रा हूँ जो अभी अभी रिकमेंड होकर आई हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपनी एसएसबी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। होप आप सभी को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले और आप इसे अपने लाइफ में इससे थोड़ा कुछ ना कुछ फॉलो कर सकें। सो स्टार्टिंग विद माई डे वन इज योर स्क्रीन इन डे। स्क्रीन इन डे पर हम लोगों ने सुबह इट स्टार्टेड फ्रॉम 9th जुलाई अप टिल 13 जुलाई। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रीन इन डे। मेरा जो स्क्रीन इन था वो 9th जुलाई को था। तो हम लोगों ने सुबह 6:30 बजे के करीब में रिपोर्ट करा। रिपोर्ट करने के बाद हम लोग का कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुआ, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद हम लोग गए OIR टेस्टिंग के लिए। OIR टेस्टिंग में एक चीज़ मैंने देखी कि पहला सेट तो जो था वो थोड़ा मुझे ईजी लगा, बट जो सेकेंड टेस्ट था हम लोग का वो थोड़ा सा ट्रिकी था। मेरा जो पहला टेस्ट का सेट था उसको आई वॉज एबल टू कम्प्लीट बिफोर 4 or 5 minutes ऑफ द एक्चुअल टाइमिंग, बट my second test it was a bit tricky for me, so I was able to complete it but in my whole time। मैंने कुछ छोड़ा नहीं उसमें, मैंने उसे कर लिया। The next thing after OIR was our PPDT, sorry। In PPDT the image that was shown to us was of 3 people। एक बेंच लगी हुई थी, उस बेंच के आसपास 3 लोग खड़े हुए थे, तो जिसके अंदर से एक लेडी थी और 2 मेल कैरेक्टर्स थे। तो उसके ऊपर मैंने स्टोरी ऐसी बनाई कि ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन की लड़की है जो अपना MSc कर रही है बनस्थली विद्यापीठ से, और इसने अभी एक मेजर प्रोजेक्ट बनाया है जो कि लेंथेनाइट बेस्ड हाइब्रिड मटेरियल्स है। ऐसे करके मैंने उसके अंदर उसके एक्शंस डाल दिए कि वो क्या क्या काम कर रही है, वो कौन कौन से रेफरेंस पेपर पढ़ रही है, वो अपने सर्स के साथ, वो अपने गाइड के साथ मिलकर काम कर रही है। उसने पहले कंपाउंड बनाया एंड ऑल दोज थिंग कि उसने कहाँ कहाँ टेस्ट करे। इन दिस वे आई रोट माई होल स्टोरी। व्हेन इट केम फॉर द नरेशन वी वर इन अ ग्रुप ऑफ 15। हम लोग ओवरऑल 105 रिपोर्टिंग्स थे, जिसके अंदर से हम लोगों को 15 के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जब हम लोग ग्रुप्स में डिस्कशन करने के लिए बैठे तो वहाँ पर थोड़ा केओस क्रिएट हो रहा था। तो पहली एक बार तो हमें ऑफिसर्स ने थोड़ा इंटिमेट करा कि आप लोग शांति से डिस्कशन करिए वरना हम लोग कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, बट लेटर ऑन वी वर नॉट able to listen anybody, so he divided us into 2 parts। पहले ग्रुप ने डिस्कशन करके ये स्टोरी का कंक्लूजन निकाला कि वहाँ वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो एक विलेज के पास गए हैं। उस विलेज में उन लोगों ने नोटिस करा कि एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड का पानी काफ़ी गंदा हो रहा है, तो वो लोग IoT की हेल्प से उस पॉन्ड का पानी क्लियर करेंगे। इन दिस मच स्टोरी दे नरेटेड एंड दे डिस्कस्ड। देन ही पास्ड अस टू अस दैट नाउ इट इज़ द टाइम फॉर सेकंड ग्रुप टू डिस्कस। When it came to us, the girls of my group were saying कि हम लोग नई स्टोरी बना लेते, हम लोग नई थीम ले लेते जो हम लोग के साथ थी, जो हम लोगों में कॉमन थी। सो आई टोल्ड हिम कि अगर हम लोग नई स्टोरी बनाएंगे तो शायद इसमें हम लोग को डिस्कशन में टाइम ज़्यादा लगे, तो बेटर है कि इन लोगों ने जो थीम अडॉप्ट किया हम उसी थीम को आगे बढ़ा देते हैं, उसके अंदर बस हम एक्शंस डाल देते हैं, उसको कुछ बेटर कर देते हैं इस तरीके से कि सिंस वो लोग विलेज में हैं तो इंटरनेट की जगह वो कन्वेंशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं उस लाइब्रेरी में जाकर, जहाँ पर उनको ये पता चल जाएगा कि कैसे पुराने टाइम में जहाँ पर पानी गंदा हुआ करता था उसे क्लियर कर लिया जाता था। Girls agreed, we added some actions in it and hence PPDT was done। Later on when results came out for screen-in test, from my group 4 of us was screened in and we all 4 were continuous girls, 1 before me and 2 after me. In this way we 4 were screened in. So out of 105 girls 27 got screened in and rest was screened out। So day 2 was our psychologist test। In psychology the first test as you all know is TAT। TAT comprises of 12 stories that you have to write and the 12th one is a blank slide। So वो जो 12 stories थी उनको देखते ही मैं हमेशा ये सोच रही थी कि क्या मैं सिचुएशन में कभी रही हूँ, नहीं रही हूँ तो क्या ऐसी सिचुएशन मैंने कभी देखी और मेरा स्पॉन्टेनियस एक्शन क्या था इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। In this way I have wrote all of my stories in a positive manner and I was able to finish all of my stories without missing any। The 12th story, talking about the 12th story, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि 12th story में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। I am not a assessor, I am not a person who can tell you whether it is right or wrong, but what I have done was कि मैंने अपनी लाइफ में मेरी एस्पिरेशंस क्या है आगे करने के लिए, मैंने उसके ऊपर अपनी एक स्टोरी लिखी थी कि एक लड़की है वो अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहती है, उसका एम क्या है। इट वॉज ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, मैंने अपनी एस्पिरेशंस लिखी थी अपनी 12th स्टोरी में। लेटर ऑन the next test was WAT, word association test। In WAT I was the one who have completed 56 WAT and I left 4 क्योंकि टाइम की वजह से मैं लिख नहीं पाई थी। सो मैंने 56
WAT कर दिए. Second was T8. The third one was SRT, situation reaction test. So in situation reaction test, I was able to write 39 or 40 around. मैंने 20 SRTs छोड़े थे. So I have seen people asking me कि अच्छा इतने सारे SRTs छोड़ दिए फिर भी. But I felt that कि शायद वो लोग आपसे क्वांटिटी एज्यूम नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में लिख रहे हैं. दे आर एक्सपेक्टिंग द क्वालिटी, कि आपने जितने अटेम्प्ट करे हैं आपने उतनों में कैसा रिएक्शन दिया है, बिकॉज फ्रॉम दैट दे आर एबल टू जज योर पर्सनैलिटी. सो आई हैव डन 40 SRTs आउट ऑफ 60 एंड लेटर ऑन द SD पार्ट. SD में 5 क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर्स आपको लिखना होते हैं. तो चारों के आंसर्स पहला ये था कि व्हाट डू यू थिंक योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक योर टीचर्स और योर एम्प्लॉयज थिंक अबाउट यू इन दिस वे. सो दैट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कि अच्छा, बिकॉज वॉट हैपेंड विद मी कि ना हम लोग के जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो SSR हम लोग के साथ वहाँ पर थे, ही टोल्ड अस वन थिंग वेरी क्लियरली कि आप लोगों के दिमाग में बहुत प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होंगे. आप लोगों ने सोशल मीडिया से ये पढ़ा होगा कि आपको ये लिखना है, आपको वो लिखना है, बट आप एक चीज़ दिमाग में रखिए, आपको वो लिखना है जो आप सोचते हैं. बिकॉज द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक. यू आर नॉट सपोज टू राइट व्हाट दे थिंक, यू हैव टू राइट व्हाट डू यू थिंक. दिस वॉज इनफ टू लेट मी नो कि हमें लिखना क्या है. मैंने अपने हिसाब से मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैंने अपने आंसर्स उसमें लिखे. एंड द फिफ्थ वन कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बिकम or what are the improvements that I have to do in myself. In that I have written that I want to be a better version of myself. I want to be an independent girl who can handle my family, who can support my family. In this way I have written my fifth point. SD was done. Next day, on that day only, was my interview scheduled. I was the first girl who was about to give the interview, but because of some reasons my interview was delayed up to 4:30. I was waiting there till 4:30. I read some book that was kept in the waiting area. It was on the history of Indian Naval Academy. मैंने वो किताब पढ़ी और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे वहाँ से जानने को मिली कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों हैं इंडियन नेवल अकेडमी में. I was very amazed by that. So when my interview happened, my interview was again very raw, very lively and energetic from my side. Because one thing I had in my mind again, that you have to be yourself, Vaishnavi. You cannot pretend anyone else's personality over here. So मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, मैं 1 या 2 सेकंड का टाइम सोचने के लिए ले रही थी, and I was able to answer it. But all of them were very honest reaction of myself. जैसे उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपनी सैलरीज कैसे इन्वेस्ट करती हैं, आई टोल्ड हिम हाउ डू आई डू इट. दे वर वेरी स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन आंसर्स एंड वेरी लाइवली. I maintained my smile and I gave him the answers. So my interview lasted around 1 hour 30 minutes, as well as he asked me that from where you have learned everything. So I told him that I have been inspired from one of my senior who has already joined Indian Naval Academy, and how she has performed over there. I got to know when I got to know about her. तो मैंने सोचा कि इनकी पर्सनैलिटी कितनी एनर्जेटिक है, ये कितना लाइवली है अपनी लाइफ में. आपको भी वैसे ही होना पड़ेगा अपनी लाइफ में. एंड यू कैनॉट pretend anything else in those 5 days, because what happened with me that in previous times I have heard this various time कि आप जब भी SSB देने जाते हो आपको you have to be yourself, you have to depict your own personality, but I was not ready to accept it somewhere. मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं मेरी रियल पर्सनैलिटी बताऊँगी तो उन्हें आइडियल इंसान कहाँ से मिलेगा. उन्हें आइडियल लोगों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उन लोगों की ज़रूरत है जिनको वो आइडियल बना सके. एंड यू हैव टू बी दैट पर्सन जो आइडियल बन सके. सो डोंट थिंक कि आपको आइडियल बन के जाना है, आपको आइडियल बनने के लिए जाना है वहाँ पर. दैट्स इट. सो द थर्ड डे वॉज आर PGT and the ground task, basically GTOs. So it started with GD. In GD we had 2 topics. The first one was that media today is not that much independent and clear as it used to be. So what do you think are the causes and remedies for the same? So we all were very fine with each other. We gave everybody time to speak, and those who were not speaking, we let them speak, and in this way our first GD happened. In the second GD, there are 2 GDs basically. So in the second GD, our topic was that boys are not getting proper platform because of some reasons, that they are not able to say what they feel. So what do you think that are the causes for this? And if you think that women has got more importance and boys are not able to speak themselves, what do you think are the causes for, what are the remedies for it? But my group was somewhere discussing that what are the causes for it. So I told them that ladies, we are deviating from the topic, we have to come back to the topic and we have to discuss the remedies.
So I gave them certain remedies that they are seeking for acceptance. We have to accept their personality as they are. If we are not accepting them, we are rejecting them, they might not say what they are. और हमें ये नहीं करना है. हम लोगों ने जैसा लड़कियों को इंपॉर्टेंस देना शुरू करा था, वैसे हमें लड़कों को इंपॉर्टेंस देना है. एंड इट इज़ नॉट अबाउट इंपॉर्टेंस, वी हैव टू मेंटेन अ न्यूट्रल stand over everything. That's it. So in this way our GD happened. Next thing was GP. So our GP happened very well. We all were able to discuss the solution, but the solution was not that workable, but still we were able to discuss it very politely and with each other. So after GP it was our PGT. PGT is progressive group task. In progressive group task, I have felt that in my previous attempt my PGT was little bit weak because I was not able to imagine that what's happening over there. So what happened this time that I have a clear vision in my mind कि इस बार मैं सिर्फ ये सीखूंगी कि ये जब पीजीटी किया जाता है तो इस पीजीटी में बल्ली कहाँ फंसा रहे हैं वो लोग, या फिर वो जो फट्टा है उसको कहाँ फंसा रहे हैं, रस्सी की नॉट्स कैसे बन रही है. बिकॉज इन माई प्रीवियस एसएसबी आई वॉज नॉट दैट गुड इन पीजीटी एंड एचजीटी पार्ट. तो आई वॉज देयर टू हेल्प देम. अगर आपको फट्टे की जरूरत है, आई एम हियर विद द फट्टा इन माई हैंड, आई हैव द रस्सी इन माई हैंड, बिकॉज आई डू नॉट नो व्हाट आर द आइडियाज दैट आर वर्केबल. एंड ऑल दिस वाइल आई वॉज लर्निंग कि कैसे सीखना है, कैसे करना है इस चीज़ को. बल्ली कहाँ फंसाए, किस एंगल पर फंसाई जाए कि वो ज़्यादा स्टैटिक रहे, वो ग्राउंड पर नहीं लगे, या फिर आपको बल्ली को कैसे रखना है कि बल्ली रोल ना हो, फट्टा कैसा अटैच होना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं. इन दिस वे वी आई लर्न अबाउट इन पीजीटी की टास्क कैसे करना है. आई डिड नॉट गिव मेनी आइडियाज इन माई पीजीटी. द नेक्स्ट वॉज एचजीटी. In HGT, our group was again divided into two because it is half group task. So the first group was able to complete the task, but my group was not able to complete the task. But now this time I was able to give ideas which I was not able to give previously. So HGT happened again. The next task was GOR. GOR is group obstacle race. So GOR is very lively and enthusiastic thing that all the people are competing with each other with having a big snake in their hand, and our group come first. So GOR, I really enjoyed GOR very much. After GOR, the task was lecturate, and lecturate was something which I felt that since I had not done, I was not in the contact of current affairs much, but I thought that I have to perform well in lecturate. So I was little bit nervous before my lecturate that what facts will I tell and what will I say. But one thing, when as soon as the topic came in my hand and I stood in front of everyone, I started speaking it confidently. Whatever I knew, I started it confidently. So I had 4 topics in my hand. The first one was election campaign. The second one was independent media. The third one was yoga, and the fourth one I could not remember it. So I was confused that whether should I choose election campaign or independent media. So I thought that election campaign I can speak, but independent media is a topic which I got in GD as well, and I was not able to put all of my points since everybody was speaking. So this is the right point. Whatever I feel about independent media, I'll include it. So I started speaking on independent media for 3 minutes, and I spoke well, confidently, without getting nervous. So I put my views, I put the pros and cons, and I spoke very well over there. So day 3 was done. Day 4 was again GTO 2. So day 4 started with our individual obstacle. So in individual obstacle I was able to complete 6 tasks out of the 10, and it was very fun again. Individual obstacle. There were certain girls who have completed 10 obstacles and were very good with their staminas and all, and I was able to complete 6 out of them. The next part was command task. In command task, 3 girls called me, and I was the last second chest number in my group. So 3 girls called me, and I was able to give certain ideas when they asked me. And when my turn came, it was very important that what happened when my turn came, that my obstacle consisted of 3 bridgings. कि स्टार्टिंग लाइन है, एंड लाइन है, और उसके बीच में आपको 3 बार अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपने रस्सी फट्टे बल्ली को प्लेस करना पड़ेगा, तो आप 3 ब्रिजिंग्स में उसको क्रॉस कर पाओगे. सो आई वॉज एबल टू कंप्लीट माई फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्स्टिकल, बट इन द थर्ड वन आई वॉज स्टक कि अब मैं क्या करूँ. आई वॉज ट्राइंग हार्ड कि शायद मैं यहाँ से कुछ लगा लूँ या मैं यहाँ पर रस्सी को बांध लूँ तो कुछ हो जाएगा, बट इट वॉज नॉट वर्किंग आउट. सो द GTO asked me that chest number 16, can you do it? So I told him that, sir, I think I'll get an idea. So he told me that, okay, you have 1 minute, start preparing for it, start getting the idea. So again in that minute I could not get anything. So he told me ki ask your subordinates if they have something. So I asked my subordinates that, do you have any idea? So they told me ki no, we do not have any idea.
So I told him that, sir, we three do not have any idea. So he told me that, okay, I'll do one thing, that the platform that is blue right now, I'll make it white. He has changed the condition now. So I was able to complete it then. So yeah, I told him that, sir, then it will be easy, I'll be able to complete it. Now one thing that I have usually seen with people, that whenever it comes to command tasks, they are a little bit confused that how they have to do, what they have to do. I don't know that what is the ideal way, but I will tell you that what I have done. I was very clear with my instructions. If I am supposed to tell them that you have to give me the fatta, I'll tell them loudly and boldly that, okay, chess number this, please hand me over this, and can you please check that whether this is workable or not. Or if the task is a little bit risky that you can fell down from there. So I did not send my subordinates over there, I go there by myself, so that the risk of getting injured is over me, not on them. So in this way I have performed my command task. Day 4 ended, and the 5th day was conference day. My conference lasted around 10 minutes, 10 to 15 minutes I guess, and my conference was a little bit kind of interview, because there were many questions that have been asked by me. So we'll connect for conference in the next video. Thank you so much. Jai Hind.